Hi Jay, this is the first time I'm like expecting a podcaster on my other podcast. So let me get to the straight. Ki you have started podcasting last year only, okay? No, I've Last started from 2020. 2020, okay, 2020, Yeah. okay. Yeah, it's 2022. I just forgot ki I'm in 2021. What's that? So 2020, it was the year when the lockdown happened and all the most of the Yeah, yeah. creators shift to the most of the normal people shifted to the creator era. Hmm. But in my opinion, current वो जो गैप था पॉडकास्ट देखने का या फिर वेब सीरीज देखने का या फिर मूवीज वगैरह देखने का वो सिर्फ घर बैठे बैठे इट वाज अराउंड 2 इयर्स. Hmm. ठीक है मेरे हिसाब से वो सिर्फ 2 साल Like, का टाइम था. hmm. एंड नाउ पीपल आर watching small level content like छोटे छोटे content and you started making reels. Hmm. Now you're starting making shorts now. And if I don't mind I should tell that कि I found him on reels. Okay, मुझे ये reels में Hmm. मिले and I contacted him as I saw him his reels and all. So ऐसे आजकल नॉर्मली जो चीज है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए हो चुके हैं. एंड Hmm. इसमें आई वाज लाइक I sometimes think कि why are we making podcast? Like why are you still making podcast when nobody is watching it? Like, it's not about nobody's watching it. Like recently, my podcast is ranked at 136 in Apple Podcasts all over India. In philosophical. So like it's not about not many people are watching it, and I'm also not doing it that people should watch it. Hmm. I'm doing it because I like having conversations with people. I love talking and digging out some important points which I personally feel I want to learn, which I want to gain from. And podcast has given me a platform where I can contact to these people and ask them that if they would want to have a conversation with me on a certain topic, if they could be interested. So this is the major reason why I started podcasting, and now the vision has grown to spread the kind of conversations to people all over India, and the efforts are in that. And let's see what happens. Like you want to start for the conversations. Like your main purpose is Yeah, to have a conversation, not yeah. to not to gain views and all that stuff. But Hmm. see, when you are a podcaster or you are a creator, na, see many of the people think कि ये तो काम बस views के लिए करता है. For example, when you invite R Chanakya Pillai, Hmm. at that time you will have to get some kind of numbers like it's about only views. You are getting views out of this guest, kind of stuff. Or in No, Divyanshu's case. no. I like with Divyanshu. I was in conversation with Divyanshu since 2018 when he started his content creation. When he started the Divyanshu Damani show. Mhm. I was in contact with him since that time. And talking about Radha sir, he never asked me कि तुम्हारे कितने views हैं, तुम्हारे इतने views होने चाहिए, या तुम्हारा ये है या वो है. I think he was one of the earliest guests on my हाँ, I podcast. remember. Yeah, so he never asked कि तुम्हारे इतने views होने ही चाहिए, तुम्हारे इतने plays होने ही चाहिए, this and that. He asked about the genuineness of the content, like are you really willing to ask, or you are just asking for the sake of it because I am in this industry and I have this specialty, so you want to ask because of me, or you genuinely have these questions, or you want to know these questions. So this was the case which he wanted to clarify, and other than that, till now nobody has asked कि तुम्हारे views होने ही चाहिए उन तभी में. And about as being a podcaster, have you ever faced कि like sometimes ना गेस्ट आते हैं. मेरे खुद के साथ हुआ ऐसा. गेस्ट आए हैं मेरे चैनल पे एंड उन्होंने Mm-hmm. वहां पे मतलब बहुत सारी बकचोदियां की. मतलब ये जो नहीं बोलना था वो बोल दिया एंड Mm-hmm. देन दे आस्क्ड मी टू कट दैट पार्ट. सो वो पॉडकास्ट बड़ा से छोटा हो जाता है फिर उसमें. हैव यू एवर फेस Mm-hmm. दिस काइंड ऑफ स्टफ? Like लाइक लिटरली not खैरात बैठ के ऐसे much, वो रिएक्ट करते हो यार. not much. Like because I only call people who actually have done stuff or who are genuinely
so much connected with their with their vision that, like, I have few people who have just started the content creation journey, who have not done anything yet in their lives, like कोई भी views या followers या ऐसा कोई उन्होंने milestone हासिल नहीं किया है. They are just my friends who have begun with me, but I call them because I know that they have a strong vision which they want to achieve, and I genuinely feel that they are too genuine to get their vision and to accomplish their vision, firstly. And secondly, majority of my guests are people who have already done extraordinary in their lives. I have people like Radha sir, Divyansh Damani, people who already know how to talk in front of camera, people who know what to say, what not to say. And initially all my conversations were Instagram live, so I used to Okay. call them on Instagram. We were live on the conversations, so it was not like अगर उनको कुछ extra बोलना है then I have to cut it later on. So majority things are ऑलरेडी बोल like, दिया होती है, लाइक yeah, ऑलरेडी हैज बीन स्पोकन. are already known that this is what we need to speak and this is what we have to restrain from. Okay, means you have not seen this case, this kind of cases yet. I have I, seen few, but they are not that big enough. now I would like to let's get to the our conversation topic, which is self development. I heard like you told me that you are a problem solver. ठीक है. Hmm. और ये एक टाइम मतलब अभी के टाइम पे ना व्हेन देयर इज काइंड ऑफ सुशांत सिंह जैसे इश्यूज होते हैं, उस टाइम पे Hmm. ये काइंड ऑफ जो ट्रेंड है या फिर उसको बोले पैशन है या फिर काइंड ऑफ करियर जो है, इट्स Hmm. ऑन द पीक. बट लो इसकी इसमें ना इशू क्या हुआ है कि जो लोग है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, Hmm. जो काइंड ऑफ जो ऐसे स्टफ बनाते हैं जो कि सुनने में अच्छा लगता हो और बोलने के लिए Hmm. मतलब थोड़ा सा मतलब करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसको हम लोग लाइक काइंड ऑफ अगर मेंटल मास्टरबेशन का नाम दिया था, उसको एक टर्म दिया गया Hmm. था. ठीक है. तो Hmm. उस मोमेंट पे अगर हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल सेल्फ डेवलपमेंट की बात पे आए, तो सेल्फ Hmm. डेवलपमेंट ऐसा एक टॉपिक है जिसमें हम मोटिवेशनल आंसर भी ढूंढ सकते हैं, एक लॉजिकल आंसर भी ढूंढ सकते हैं, एक फिलोसॉफिकल आंसर भी ढूंढ सकते हैं. ठीक है. मतलब इसका व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट, इस Hmm. पे अलग अलग पर्सपेक्टिव है अलग अलग इंसान के. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल Hmm. माई फिलोसॉफिकल एग्जाम्पल इसकी लाइक whenever you prove your existence to make something new, like Hmm. make something new to your life or make something extraordinary in your life, this is called self development. Basically that's it. Okay, means if you are Hmm. learning something new to get extraordinary in your life, you are developing yourself. So what is self Hmm. development according to you? I want to know your answers, like your cam. Hmm. So according to me, what self development is like तुम्हारा जो भी विजन है, तुम्हें जो Mhm. भी लाइफ में करना है, या इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, if you know that I have improved myself in some or the other aspect from yesterday, that is self development. Okay, I think he got stuck. खुद की जर्नी में क्या इंप्रूव करना है हम भूल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को दुनिया का बेस्ट एडिटर बनना है, वो सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग स्किल में अपना ध्यान देता जाएगा और वो दूसरे सारे एस्पेक्ट में अगर इंप्रूव नहीं होगा या होंगे, या in terms of communication, in terms of creativity, in terms of the connecting to people, in terms of making friends, making relationships, making family bonding, अगर इन सब चीज़ों में वो नहीं improve होंगे, then there's no much meaning of actual self development. Self development मतलब मेरा development, एक इंसान का development जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है. अगर मुझे एज एन इंसान डेवलप होना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक करियर एस्पेक्ट में डेवलप नहीं होना है, मुझे इंसान के हर एस्पेक्ट में डेवलप होना है, जहाँ पे मुझे मेरी पर्सनालिटी में डेवलप होना है, मेरे कम्युनिकेशन, फैमिली, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ को लेके डेवलप होना है. सिर्फ और सिर्फ मुझे ना ही करियर से रिलेटेड, ना ही रिलेशनशिप से रिलेटेड, ना ही सिर्फ और सिर्फ फैमिली बॉन्डिंग से रिलेटेड, मुझे हर चीज़ को एक इक्वल प्रपोर्शन में लेके आगे बढ़ना पड़ता है. So if I'm improving in any of the aspects each and every day, सपोज आज मैं अगर मेरे रिश्ते बनाने में इम्प्रूव हुआ हूँ, कल मैं मेरी करियर के स्किल सेट में इम्प्रूव हो रहा हूँ, परसों में किसी और चीज़ में इम्प्रूव हो रहा हूँ,
देयर शुड नॉट बी एनी फिक्स एजेंडा कि इसी में इम्प्रूव होना है, बट ओवरऑल अगर मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ देन इट इज सेल्फ डेवलपमेंट. बट मेरा like in my opinion कि whatever you are lacking, see I'm not lacking in any relationship, my relationship personally everybody is lacking in some and something and something like अगर if you are saying कि करियर में मैं इधर इतना लैक कर रहा हूँ तो इतना नहीं लैक कर रहा हूँ, मतलब एक बीच में हूँ मैं, ऐसा एक everyone can say that kind of stuff कि मेरे को for example अगर I have now a corporate job so I want to become a manager, so अभी I am improving myself. Okay. So secondly, for example, if you are in a relationship, you are not arguing once in a day. You are like trying to solve your fights as soon as possible. Then you want ki a bit fight see now. इसको self development. That's what you want to say. Is I'm नो, इट्स नॉट like अबाउट कि quoting हम correct? डेवलपमेंट को मेजर करें Mm-hmm. कि अगर रिलेशनशिप में है तो फाइट्स हो रही हो तो फाइट ना हो, फाइट हो रही हो तो कम हो रही हो. आई डोंट सी इट एज अ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इन द सेंस कि अगर आप सिर्फ फाइट से रिलेटेड डेवलपमेंट देख रहे हो तो रिलेशनशिप में भी बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं. Mm-hmm. रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग आती है. रिलेशनशिप में फिर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्वर्सेशंस, फाइट्स, कंपेनियनशिप, सपोर्ट, स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. Mm-hmm. आपको लगता है कि चलो मेरा रिलेशनशिप टेरेबल, आप अपने पार्टनर से एक बार पूछ के देखो कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट मोर कैन आई डू फॉर यू. सबकी एक ना एक चीज़ ऐसी होती है कि आई वांट दिस मोर, आई वांट दिस मोर, आई वांट दिस मोर. हमें भी चाहिए होता है कि मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए बैंक में तो 10 करोड़ हो, 10 हो तो 100 करोड़ हो. Even Elon Musk, being world's richest human being, wants to More. become more rich. सबकी एक ना एक डिजायर होती है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए. फर्क ये है कि हम उस चीज को पाने के लिए एक बड़ा सा फाउंडेशन बढ़ाना पड़ता है. अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टेज बनाना है, मुझे खड़े रह के बात करना है सिर्फ स्टेज के सेंटर में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जो सेंटर की चीजें हाइट पे बनाऊं. मेरे को एक फाउंडेशन अच्छी हाइट पे बनाना है, तब जाके मेरा सेंटर और अच्छी हाइट पे बनेगा. तो मुझे जो डिजायर चाहिए उसके साथ साथ एक ओवरऑल फाउंडेशन भी मुझे ग्रो करना है. सो मुझे सिर्फ एक चीज को एक जगह पे पकड़ के ग्रो नहीं करना है, मुझे ओवरऑल हर चीज को पकड़ के ग्रो करना है. सो आई डोंट वांट टू बी very specific in terms of self development. I would say self development is non specific, is more about how do you feel about yourself. As I अगर said, मेंटल ना हेल्थ में आज मुझे अगर दुख हो रहा है तो क्या मैं कल इस दुख से बाहर आ पा रहा हूँ? फिर उसके टेक्निकलिटीज बहुत सारे डिफर होंगे. क्या दुख है, कैसे सॉल्व करेंगे, दिस दैट. तो उसमें एक ओवरऑल फाउंडेशनल बन जाता है. एज आई सेड कि हर किसी का एक अलग अलग आंसर है इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट इन योर लाइक इन सी सेल्फ डेवलपमेंट तो एक रह गया. द क्वेश्चन इज कि सेल्फ डेवलपमेंट तो होती रहेगी बट द प्रॉब्लम इज फिलोसफी. फिलोसफी में ना सेल्फ को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे क्वेश्चनलिटी है कि एम आई रियल, डू आई एग्जिस्ट, लाइक why do I exist, who am I, that's the questions everybody asking philosophy. So मतलब existentialist के एक पूरा का पूरा एक सोसाइटी एग्जिस्टेंशलिस्ट की कि ये लोग इनके ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिंदा रहते हैं. तो as per my opinion what is your concept like सेल्फ के कॉन्सेप्ट के क्या बोल सकते हैं हम लोग. एक अगर सेल्फ का डाउट, सेल्फ को अगर हमने जज किया कि एक इंसान है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि why I am a self, like what is the self concept as per you? Like I didn't got your question. What the basically concept of self, what is the concept of self like? Let me tell you just a second. There is an answer I wrote in my notebook yesterday only. Our energy comes from what we intuit when you awaken like out of sleep. Do it gradually, observing how all that comes into existence comes through your perception of it, of the deepest dark. You shine your light on everything to create becoming separate from nothing. So it's like your concept of self is basically you are
you are real, okay, and you have a Hmm. brain, so you can think. See, मोस्ट ऑफ द पीपल ना, मेरे मेरे मैंने इतने लोगों को देखा है कि मैं एक एग्जांपल के साथ समझा हूँ कि कुत्ता सोच नहीं सकता, ऐसा बोलते लोग, कुत्ता सोच नहीं सकता, Hmm. डॉग्स कैन थिंक, ओके, एंड ह्यूमंस Hmm. कैन थिंक, दैट्स व्हाई ही एग्जिस्ट, बट एट द सेम टाइम वी नो दैट अदर एग्जिस्ट टू, Hmm. ओके। सी फॉर लाइक मेरा अगर कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, तो मैं बोलूंगा आई थिंक देयरफॉर आई एम, ओके, आई थिंक देयरफॉर आई एम, Hmm. आई एग्जिस्ट, दैट्स इट। बट इसी Hmm. मोमेंट पे अगर मैं किसी और को लाइक ऐसा बोलूं कि ये तो सोचता भी नहीं है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, फिर दे हैव नो आंसर, Hmm. ओके। सो अगर सेल्फ डेवलपमेंट के हिसाब से अगर सेल्फ को जज किया जाए ना, तो यू आर जस्ट एन Hmm. एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो कि वॉन्डर करना चाहती है यहाँ वहाँ, और नई नई चीजों को एक लाइक फॉर एग्जांपल समझना चाहती है, अंदर ऑब्जर्व करना चाहती है, एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, अडॉप्ट करना चाहती है, फॉर दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसमें सेल्फ को ज्यादा ये Hmm. करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ओके। Hmm. या सो Like I feel कि क्या, टेल मी, हाँ बोलो। टेल मी, आप बोलो। I feel कि the concept of self is majorly about how you perceive and what you perceive. हम्म, Uh, because I have done problem solving sessions and I have seen people losing their sense of identity. हम्म, कि who am I? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये? Because people get so much attached to things, and when they do not get that thing, or they sense of connect their identity with that particular thing or the goal or the vision they have, फिर उससे उससे इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि they just cannot detach themselves from their sense of identity. एंड क्योंकि वो चीज़ उनको अचीव नहीं कर पाए, वो चीज़ वो हार गए, तो उनकी आइडेंटिटी ही चली जाती है, उनका आइडेंटिटी सेंस ऑफ क्राइसिस। उनकी सेंस ऑफ सेल्फ चली जाती है, आइडेंटिटी क्राइसिस. So from what I have seen and observed, I feel that the way you perceive the world, that is what makes you think about yourself. And perception not only does mean the five senses wala perceptions mean how attached you are to a thing. जैसे कि आप बहुत सारे लोग किसी अपने विजन से अटैच हो जाते हैं, कोई पैसे से अटैच हो जाते हैं, कोई इज्जत से अटैच हो जाते हैं, स्टेटस से अटैच हो जाते वो हैं, रिलेशनशिप कोई से हटाई। हाँ किसी भी चीज़ से अटैच हो जाता है. वो सेंस ऑफ अटैचमेंट भी परसेप्शन में आ जाता है. आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हो, आप किस तरीके से चीज़ों को जज करते हो, even that comes in my sense of perception. ओके, सो बेसिकली मैं रिसेंट में एक सदगुरु के कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाई थी, एंड इन दैट वीडियो मैंने बोला था कि वी आर लिविंग इन अ मूवी, ओके, वी ऑल आर Mhm. लिविंग इन अ मूवी, और वो मूवी जब टूटती है, एट दैट टाइम यू कम टू योर रियलिटी, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर सी मैंने एक रोमांटिक मूवी देखी, ओके, Mhm. आई विल गिव यू ऑनेस्ट एग्जाम्पल, आई वॉज इन 11th एट दैट टाइम ना, ए दिले मुश्किल रिलीज हुई थी, ओके, Mhm. एंड ए दिले, आफ्टर वॉचिंग ए दिले मुश्किल, आई फॉल इन लव वन साइडेड एंड आई डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप एट ऑल, ठीक है, एट दैट टाइम, Mhm. मतलब मैं उस मूवी में इतना खुश चुका था, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना था, मुझे बस Mhm. वह एक तरफा प्यार की मजे लेने थे, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग Mhm. कॉन्स्टेंटली, कि लोग अगर रिलेशनशिप में आ भी गए, तो वो एक अपनी मूवी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी इस मूवी के जैसे होगी, और उधर से जरा भी यहाँ वहां हुआ, एंड देन वो मूवी चेंज, और इसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि लोग सुधर जाते, मूवी बदल जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर आई एम इन रिलेशनशिप, Mhm. माई रिलेशनशिप इज गोइंग गुड, सो फॉर देन माई मूवी इज लाइक बचना है हसीनो, फॉर एग्जाम्पल, और ये जवानी ये दीवानी टाइप ऑफ मूवी Mhm. मेरी लाइफ में चल रही है, ओके, और इतना से मेरा ब्रेकअप हो गया, तो माई लाइफ इज कबीर सिंह। So this is Mhm. what sense of identity people are having from the fictional characters or anywhere.
लाइक अभी आई एम जस्ट गिविंग अ बॉलीवुड एग्जांपल, और ये तो कहीं से भी मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहे हैं एग्जांपल्स, लाइक मेनी पीपल वांट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग आफ्टर वॉचिंग स्कैम 1992। क्या लॉजिक है इस बात का? हम्म सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि लोग ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर से जो आइडेंटिटी चुराते हैं या उनके जैसा बनने का प्रेटेंड करते हैं जिनकी एनवायरमेंटली जो पॉसिबल नहीं होती चीजें। इफ यू वांट टू बिकम समवन लाइक समवन ना, तो उसके लिए यू हम्म नीड सराउंडिंग्स। ओके, उसके लिए तुम्हें सराउंडिंग चाहिए सेम टू सेम उस इंसान जैसी। हम्म ओके, या सो so like when we get this क्या बोलते हैं too much when we get too much attached with this uh, sense of identity जहाँ पर हम दूसरे से identity लेते हैं is because we do not have any vision and vision in the sense of clarity कि मुझे exactly करना क्या है। हम बोलते हैं ना जय शेट्टी के वीडियोस में वो देखते हैं कि you should have a sense of purpose in life। सेंस ऑफ पर्पस में हम पर्पस ढूंढने जाते हैं, पर्पस हमें मिलता नहीं है, हमें कोई इंस्पिरेशन मिल जाती है ऐसे लोगों से, और फिर हम उस इंस्पिरेशन को पर्पस में कन्वर्ट करके उसके पीछे भागते हैं। एंड वी व्हाई वी डू नॉट हैव सेंस ऑफ पर्पस इज बिकॉज वी डू नॉट हैव clarity about the opportunities we have. We do not have variety of thoughts to think upon. और दिस इज नथिंग अबाउट जस्ट ओनली अबाउट फिक्शनल कैरेक्टर्स, रियल कैरेक्टर्स के बारे में भी यही हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम दोनों भी ये कबूल करेंगे कि हम यूट्यूब पे भी इसीलिए कहीं ना कहीं पे like हाँ, we that's have for taken sure. the inspiration from real person, like you have taken from maybe Ranveer Alabadia, or I have taken from maybe Fetab or kind of stuff, like मैंने किसे भी मेरा अलग अलग पर्सपेक्टिव था। I started channel from my vision about Vedant University, and now I am thinking like I'm doing like Fetab or Prakhar or something like that, so it's on, Hmm. इट्स रियल। मतलब हम हर कोई अपने अपने पर्पस के लिए कुछ ना कहीं से तो चुराता है। ओके, और देयर इज नथिंग So कॉल्ड जो जय that's शेट्टी common. के जो पॉडकास्ट में जो बोलते हैं ना वो कि यू हैव टू फाइंड समथिंग लाइक पर्पसफुल, इट्स अ वो इतना पॉसिबल नहीं है। मतलब इट्स नॉट वेरी इजी कि फटाक से मेरा पर्पस मुझे मिलेगा। More than easy, like, see, what I feel he means to say is because कि क्योंकि एक अगर आप एक चीज देखो, अगर आप कोई हॉर्स ले लो, अगर किसी हॉर्स को मुझे रेस जितानी है, आई नीड माई हॉर्स टू सी द ट्रैक और टू फोकस ऑन ट्रैक मोर अदर देन द अदर डिस्टर्बेंस। बट तो मैंने हॉर्स को एक पर्पस दे दिया, देन द हॉर्स इज मोर लाइकली टू विन द रेस, राइट। बट अगर मुझे मेरे हॉर्स को पता ही नहीं है रेस ट्रैक क्या है, अगर मेरा हॉर्स एक जंगल में रह रहा है और मुझे उस जंगल वाले हॉर्स से रेस जितानी है, तो मुझे उस हॉर्स को ट्रेन करना होगा ट्रैक पे फोकस करने के लिए, और उसके लिए मुझे उसको ट्रैक से फेमिलियर करवाना होगा। सिमिलरली हमारा दिमाग अभी जंगल में है, हमें पता नहीं है हमारी लाइफ की रेस क्या है। हमें पहले एक तो एक्सपैंड करना होगा हमारा विजन, हमें देखना होगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अभी दुनिया में। फिर उसके बाद हम उसको उस पे फोकस करेंगे, उस पे नैरो डाउन करेंगे, और फिर उस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि क्या ये चीज मेरे लिए है या नहीं है। और अगर ये चीज नहीं है, वी विल गो एंड फाइंड अनदर ट्रैक टू रेस इन। द प्रॉब्लम विद अस इज either we do not either we do not have any idea of what the track is, इधर अगर हमें ट्रैक पता चल गया तो हम उस ट्रैक से इतना जुड़ जाते हैं कि हम कोई दूसरे ट्रैक को देखना या ऑब्जर्व नहीं चाहते, हम उसी ट्रैक में बैठ के कंप्लेन करते रहते हैं, यार मैं रेस नहीं जीत पा रहा। other than you understanding that there might be some other track made for you, just go and explore. We do not have the courage of exploration, and that is what is making us lack in finding the true sense of purpose. जय शेट्टी का मतलब पर्पस फाइंड करना कि तुम एटलीस्ट एक्सप्लोरेशन तो चालू कर दो, ढूंढो तो सही तुम्हें क्या अच्छा लगता है। अगर तुम वही एक्सप्लोरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम यू आर नॉट लाइकली टू फाइंड द ट्रैक विच ऑन विच यू विल विन योर रेस।
Sorry, continue. यही था. Okay. So I heard you, but थोड़ा सा distraction आ गया था बीच में. Someone is in my door, so that's it. No issue. So मैं ये बोल रहा था कि I like you I like you said कि purpose कि you should expand first yourself and then experiment about that thing and then observe and then adapt as you get your vision narrow. So people like to experience at one time in a different way. Like they like to multitasking. Side hustle culture उसी के regarding है. Just a second ना. So as you said कि हाँ purpose के regarding we should first experiment then observe and then adapt. And इस मामले में ना मल्टी एक्सपेरिमेंटल्स बहुत होते हैं. साइड हसल कल्चर एक इजी रिगार्डिंग है कि हसल करो आगे बढ़ोगे और उसके उसके बेसिस पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जैसे चीजें. तो इन माय ओपिनियन ना कि अगर कोई करियर में परस्यू करना है इन काइंड ऑफ सेंस तो इफ यू वांट टू फाइंड अ पर्पस so how do you think like how to find your career like this is the way na experiment observe and adapt. This is what you want to say. Okay. हाँ. Now my last question will be ki growth is an essential in life. Growth is evidence of your life. What is your opinion on this statement? ये एक बुक में लिखा गया था पुराने बुक में फिलोसफिकल बुक में कि ग्रोथ एक एविडेंस है लाइफ का. ओके आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ऑथर बट द नेम वाज जॉन आई गेस आई डोंट रिमेम्बर द फुल नेम. ही सेड कि ग्रोथ एक ऐसी चीज है कि तुम्हारी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है कि तुम्हें एग्जिस्ट होने का एक एविडेंस प्रोवाइड करती है. यू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रोथ. ओके. So what do you think about this? Do you really need growth to prove your existence? Logically, Growth in sense of what? anything like That's the main question. if you are growing, like if you are learning something new on this day. See, I am talking to you. I'm learning something new about your content or your ideas about perspective. So I have a evidence of my life. Okay, I'm growing. I'm getting to know new things. ओके मुझे नई चीजें मालूम पड़ रही है. मैं लोगों से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ मतलब कुछ ना कुछ मेरे ग्रो हो रहा है अंदर. ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लाइक इसमें व्हाट इज योर ओपिनियन? Like, I I do not know, to be very honest, like on what sense exactly it is trying to say. I'm still not confused in terms of सी what it's trying to existential you know existence like existence. ओके. say. एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के दो तरीके होते हैं पोएटिक और लॉजिकल. ठीक है. लॉजिकल वे में इफ यू वांट टू से कि पोएटिक वे में हम लोग बोलते हैं कि यार यू एग्जिस्ट. ओके दैट्स इट नथिंग एल्स कि लाइफ में कुछ मीनिंग है नहीं. ओके. बट अगर लॉजिकली सोचा जाए पोएटिकली सोचा जाए तो लाइफ ही पूरा मीनिंग है. ओके ये दो तरीके के लॉजिक बोलते हैं. लॉजिक बोलता है कि लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं है और पोएम बोलते हैं कि लाइफ ही पूरे मीनिंग का सोर्स है. ठीक है. तो ऑन द कॉन्ट्ररी एग्जिस्टेंस पे बोलते हैं कि पोएम्स बोलती है कि एग्जिस्टेंस रियल नहीं है. हम एक बस एक कैरेक्टर से रंगमंच के जो कि डेवलप कर रहे हैं ऑटोमेटिकली. भगवत गीता में भी यही लिखा था कि यू आर द प्ले कैरेक्टर्स ऑफ माय स्टोरी. ओके दैट्स इट ऐसा लिखा गया था भगवत गीता में भी. और उस पे अगेंस्ट पे लॉजिक ये बोलता है कि if we are the characters, okay, then how are we using our own consciousness to get something new, to learn something new? Okay, for example, a baby gets born. Okay. And बच्चा पैदा होता है पहले वो पलटता है. ठीक है. वो पलटता है तो वो कुछ नई चीज सीखा अपने आप से पलटता है. उसको कोई मतलब सिखाता नहीं है कि कैसे पलटना है वगैरह. वो अपने आप से सीखता है. ओके. See, if he was the character of the play of directed by God, then how he does something by his own.
लाइक जब वो बच्चे पलटने वाली बात है, हम बोलते हैं कि चलो वो बच्चे ने खुद से किया, बट आप ये सोचो, हम इंसान बायोलॉजिकली ऐसे बने हैं कि हम कोई भी रिएक्शन करते हैं वो तभी करते हैं जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा ऐसे घूमा, अब हमें तो लगता है कि यार बच्चे अपने आप से घूमा, बट क्या पता बच्चे को कहीं पे इचिंग हो रही है इसलिए घूमा। बच्चा तो एकदम छोटा सा है, उस वो थोड़ी कुछ बोल सकता है। उसको ईचिंग हो रही हो, वो शायद घूम गए। अब ईचिंग क्या उसको खुद से हुई? ये नहीं। ईचिंग तो एक स्टिमुलस है ना, शायद कपड़े की वजह से हुई हो, शायद जहां पर वो लेटा हो उसकी वजह से हुई हो। आई एम नॉट टेलिंग दैट वी आर इन कंट्रोल ऑफ one supreme power which is doing all the things, but I feel like because I'm a student of physics, and I have a keen interest in learning about what universe does and what nature has for us. I feel as if um everything is not coded, but every reaction of everything is coded. For example, अगर अगर मैं बड़ा होके अगर मेरी थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि अगर मैंने किसी को रोड पे लिटर करते हुए देखा, मेरे लिए वो बहुत ही गंदा है, वर्सेस किसी और के लिए रोड पे लिटर करना नॉर्मल है। हम्म। व्हाट इज नॉट कोडेड इज लिटर करना, हम्म। बट व्हाट इज कोडेड इनसाइड मी, द reaction of littering is coded inside me from my upbringing. Okay. The thing which is happening, it might not be coded, but how I react is coded inside me. That is my brain's neural network, which is, and my upbringing, Connected which to is your making me think, environment. yeah, connected to my environment, which is making me think littering is wrong. For someone else, littering might be cool, okay, ठीक है, चलता है। और मुझे भी नहीं पता ये इंसान लिटर कर रहा है या कर रही है। They might have something else going in their mind which might justify their thinking that littering is okay at this point, at this stage in their life, or at this particular moment, depending on the situation they are living Okay. Basically, I got your point. But in. थोड़ा सा मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि सी यू आर सेइंग कि everybody has its own consciousness dependent on their own, like other environment, like surroundings, environment, whatever. Okay. But then why we have this kind of stuff कि हम लक फैक्टर क्यों आता है लाइफ में, कि इसका लक अच्छा था, लक फैक्टर है क्यों फिर इस दुनिया में? अगर सब कुछ किसी ना किसी को सराउंडिंग है, तो व्हाई देयर इज अ लक फैक्टर इन आवर लाइफ? Luck factor is, I like, अगर मैं यही लिटरिंग वाला एग्जांपल दूं, क्या मेरा लक था कि मुझे मेरे सामने मैं किसी इंसान को लिटर करते हुए देखूं? नहीं, मे बी सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग। इट इज लाइक कि यार, many a times I feel कि I genuinely believe this in this statement कि जितना ज्यादा लकी हम होंगे, the more we need to work hard. ओके। I feel luck is like, maybe होता है, I do believe, because I feel myself very lucky to be in a position where I never expected the kind of things or people or situations which I am in. I never expected I could be this lucky in this environment. But keeping that aside, अगर मुझे वो लक सस्टेन करना है, then I have to work hard for it. लक मुझे बस दो चीज देगा, कोई भी दो चीज। फॉर एग्जांपल, अगर लक मुझे पैसा दे रहा है, मेरे को दिमाग यूज करना है कि मैं उस पैसे को कैसे यूज करूं अच्छे से। अगर मैंने उस पर दिमाग यूज नहीं किया, मैंने उस पर काम नहीं किया, तो लक चाहे कितना भी पैसा लाए, दूसरे दिन मैं करोड़पति से रोडपति बन ही जाऊंगा। इट इज हाउ वी प्ले विथ अवर एनवायरमेंट makes us more lucky or unlucky, I feel.
luck is there, but in terms of its sustenance, I feel. Nice. आई गॉट योर पॉइंट। मतलब ऐसे मत समझो, मेरी शक्ल से दिखता नहीं है कि मेरे को समझा है, बट आई अंडरस्टैंड कि Mhm. यू व्हाट यू वांट टू से। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जो ऑडियंस है वो थोड़ा मतलब अभी मेरी स्टेज पे अंडरस्टैंडिंग पे। Mhm. आई कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ स्टफ, मैं उनको इजीली एक्सप्लेन करके बताऊँ Mhm. सारी चीजें। नाउ द वे Mhm. यू सेड ना, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट जाएगा, बट आई विल लाइक मैं ट्राई करूंगा। अगर किसी को डाउट्स रहेंगे तो कैन वी हैव दिस अगेन एंड अगेन, लाइक मैं थोड़ा टाइम टाइम बाद आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द पॉडकास्टर कि आई गॉट समथिंग न्यू, लाइक आप भी रोज कुछ Mhm. नया सीखते हो, मैं भी रोज कुछ नया सीखता हूँ, सो वी Mhm. कैन टॉक। इज इट फाइन? Sure. Sure. Now, okay. Sure. So yeah, that's it. I guess. So we can end this now. Is it around 1.5 hour we have recorded? Okay, so it's fine now. No issues, man. और कुछ बात करनी है? Sure. Okay. Yeah. Thank you. As we know, कि like करना है, subscribe करना है, share करना है। जय ठक्कर शो को डेफिनेटली चेकआउट करो यार तुम लोग, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आते हैं उसमें। आई जस्ट वॉच द वीडियो व्हेन यू टॉक टू द सोनी आईज एनिमेटर। I remember that show. Yeah, So yeah, yeah. yeah. Hansa model man. Hmm. Yeah. And so on is done. Yeah. So it was very good. It was a very good show. I watched your podcast. I listened to your show sometimes in when I was traveling or something. So I like your content also. Yeah. So that's it. Thank you. Yeah. Sure. Thank you. Thank you for coming, Jay. Thank you so much.